Hi, students. So, what do we talk about today? Today, we are going to talk in depth about the hostel facilities at Delhi University colleges. When I'm talking about hostels, मैं उन hostels की बात कर रही हूँ जो colleges के hostels हैं, which are government hostels, which are maintained and run by Delhi University colleges. And before I start talking about it, I would want to thank all of you. You are the guiding force behind this channel. This is your channel because you keep putting requests to me, and based on your request, I keep making videos. So, this channel is totally driven by the students. Thank you so much for that. So, सबसे पहले हम वो हॉस्टल्स की बात करते हैं जो ओनली गर्ल्स हॉस्टल्स हैं. कौन कौन से कॉलेजेस ये हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं? सो हियर इज अ लिस्ट. आई विल क्विकली गो ओवर इट. भारती कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, दौलत राम, हिंदू, इंद्रप्रस्थ, जानकी देवी मेमोरियल, एलएसआर कॉलेज, लेडी अर्विन कॉलेज, मिरांडा हाउस, रामजस, एसआरसीसी, श्री वेंकटेश्वरा, एसजीटीबी खालसा कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, केशव महाविद्यालय, शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन. प्लीज ओवरलुक द स्पेलिंग एरर इन साइंसेज. श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स. सो ये गर्ल्स हॉस्टल है इन कॉलेजेस में. नाउ बॉयज हॉस्टल्स कौन कौन से कॉलेजेस में हैं? दीनदयाल उपाध्याय, हंसराज, किरोरीमल, रामजस, एसआरसीसी, वेंकटेश्वरा, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज. नाउ we talk about important points about these colleges. So सबसे पहले you must understand कि ये colleges का eligibility है कि ये उन्हीं students के लिए है जो दिल्ली NCR से बाहर के students है. एंड एनसीआर में बहुत सारे सिटीज आते हैं जैसे कि गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एंड दिल्ली तो है ही, विच इज एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. इसके बाहर के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा जिस कॉलेज में, आप ऑब्वियसली उसी कॉलेज के हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे. सो इसका सेंट्रलाइज्ड अलॉटमेंट सिस्टम अभी तक नहीं है. आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर आपको सर्कुलर एंड नोटिस दिखेगा रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन फॉर hostel facility. So you will register yourself, you will fill in the application online. उसके बाद एक छोटा सा आपका इंटरव्यू होगा जो डिसाइड करेगा along with your percentage of marks, along with your position on the merit list. These are the two factors. One is your interview. Interview में basically they would be focusing on how far you stay away from Delhi. The farther you are from Delhi, the more chances you have of getting admission in your college, along with the percentage of marks that you have. अब ये percentage of marks जो है ये last year तक you know कि Delhi University में best of 4 या best of 3 के basis पर 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर आपका एडमिशन होता था एंड उसी बेसिस पर आपका हॉस्टल अलॉटमेंट भी होता था. अब नाउ बिकॉज 2022-23 से CUCT हो जाएगा या DUET हो जाएगा, तो उसमें आपकी पोजीशन जो होगी मेरिट लिस्ट में उस हिसाब से along with your distance from Delhi would be the deciding factors for allotment of hostels. Now reservation is there in these hostels for SC, ST, OBC, CW etc. ये सारे reservation criterias हैं hostel में भी. अब बात करते हैं फीस कितना होता है इस हॉस्टल का. सो हर हॉस्टल सारे कॉलेजेस का सिमिलर फीस नहीं है. हर हॉस्टल का डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स दैट दे हैव, देयर इज अ डिफरेंट फी. So on an average, if we see, your fee would range between 5,000 to 7,000 rupee a month. इसमें आपका बोर्डिंग, लॉजिंग, फूड सब कुछ इंक्लूडेड होगा. Other than that, you will also have the security money, which would be refundable once you leave the hostel. Now, very important thing that you have to remember is that in these hostels, there are no ACs and at times there are no coolers also. So you should be wondering whether you should take a private PG outside or should you take the college hostel. So let's also talk about their plus and minus. See, to be very honest, private PG is a very big commercial game.
आपको एक पीजी 7,500 या 8,000 से लेकर 25,000 रुपी पर मंथ पर मिलेगा। एंड उसमें भी जो 7,500 वाला मैं बोल रही हूँ उसमें भी आपका फूड इंक्लूडेड नहीं होगा। सो यू विल हैव टू गेट द फूड फ्रॉम आउटसाइड, जिसका अगेन यू विल बी स्पेंडिंग अराउंड से 3,000 रुपी अ मंथ if you ask for a dibba service or a tiffin service. So it will cost you around 10,500 to 25,000, that too on a double sharing basis. 7,500 rupees वाले पीजी या रूम्स इतने छोटे हैं कि मोमेंट यू एंटर इनटू देम दे विल एंड। आपको पता ही नहीं चलेगा कि रूम कहाँ शुरू हुआ और कहाँ खत्म हो गया। And 25,000 wale are good comfortable rooms, but then they create a big hole in your pockets. So us hisab se, if you consider the cost, if you consider the economic factor, I would suggest the college hostels definitely are a blessing. एक और बहुत बड़ा एडवांटेज तो कॉलेज हॉस्टल का है, वो ये है कि यू डेवलप सच गुड कॉमरेडरी, सच good friends you make which remain with you throughout your life, and these friendships are the friendships for life. And वो possibility private pg या private hostel में थोड़ा सा कम होता है, because there are children from different colleges, different streams. But in a college hostel, since you have students from the same college, so you have a lot of overlapping interest and overlapping challenges. So that brings a lot of binding factor amongst the students. And I think that is the biggest advantage of staying in a college hostel. Otherwise, the challenges of a college hostel are curfew is another very big issue in college hostels, especially in the girls' hostel, because they are very much concerned about your safety and security. Delhi not being a very, very safe city on the index. So, in private PGs and private hostels, most of the time they really are not very stringent about curfew or light switch off times. And also you have that liberty when you have college fests and all, when you plan your outings with your friends. Now another very important thing is that your college hostel, also the next year allocation, अगर आपको फर्स्ट ईयर में कॉलेज हॉस्टल मिल भी जाता है तो सेकेंड ईयर में आपको एलोकेशन मिलने के चांसेस तभी पॉसिबल हैं अगर आपने फर्स्ट ईयर में कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आप डिसिप्लिन केस में आ गए, या आप कॉलेज हॉस्टल से एक्सपेल हो गए, या आपकी अटेंडेंस इतनी ज्यादा लो थी कि कॉलेज हॉस्टल वालों को ये रियलाइज हुआ कि आपको शायद हॉस्टल की जरूरत नहीं है. सो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ कॉलेज हॉस्टल, यू हैव टू मेंटेन योर अटेंडेंस. आई थिंक मिनिमम इट इज 70 or 75% attendance, and they are really serious about it. If you are being a trouble in the college hostel, then they expel you also and debar you from getting hostel from next year onwards. So ये कुछ advantages और disadvantages थे of having a college hostel vis-a-vis staying in a private PG or private hostel. Now, the facilities which you find in college hostel are far, far more than what you find in a private PG. Private PGs में आपको facility के नाम पर कुछ नहीं मिलता. यहाँ तक मैं बहुत सारे प्राइवेट पीजीज में विजिट किया, राइट फ्रॉम ब्रांडेड टू नॉट वेरी ब्रांडेड वंस. आई वाज सो स्टार्टल्ड टू सी कि एक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं है मोस्ट ऑफ दीज प्राइवेट पीजीज में. Anyway, but this video is not for criticizing private PGs. Whereas on the other hand, vis-a-vis if you see college hostels, so they are very well equipped. They have gyms, they have firefighting system in place. There is a lot of lush and green environment all around, safety and security. You have lady guards, you have guards. Then a lot of sports facilities are there, like badminton, table tennis, chess. देन सबसे मजे वाली बात यह है कि कॉलेज हॉस्टल में सारे फेस्टिवल सेलिब्रेशंस होते हैं. आप इतना घर में भी एंजॉय नहीं करते होंगे दिवाली एंड होली जितना आप अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज हॉस्टल में एंजॉय करते हैं. लाइब्रेरी अगेन इज अनदर रिसोर्स. मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन कॉलेज हॉस्टल. टक शॉप्स आर देयर and lot of nature all around. You even get to see rare birds, peacocks.
तो बिल्कुल आपके कभी कभी रूम के बाहर भी नजर आएंगे आपको. सो इट्स डेफिनेटली अ ब्लिसफुल एनवायरनमेंट एज फार एज कॉलेज हॉस्टल्स आर कंसर्न. अब अदर ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? अगर आपको कॉलेज हॉस्टल, जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज हॉस्टल्स की सीट्स बहुत बहुत लिमिटेड हैं. यहाँ तक ऐसा बोला जाता है कि आपको एडमिशन मिलना इन अ कॉलेज इज इजियर देन गेटिंग दी हॉस्टल इन अ कॉलेज. सो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस में अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल है फॉर गर्ल्स, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स का हाउस फॉर वुमेन करके हॉस्टल है, अंबेडकर स्टूडेंट्स हाउस करके फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का हॉस्टल है, देन राजीव गांधी हॉस्टल फॉर एमए एमफिल एंड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है, देन एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हॉस्टल है जो डेफिनेटली इज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. Again, if you're not able to get a seat in a college hostel, then you can depend upon these hostels, because यहाँ पर भी आपको बहुत सारे इस तरीके के फैसिलिटीज जो अभी मैंने लिस्ट आउट किए मिलेंगे. एंड ऑल्सो यू गेट अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, बिकॉज आपको अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग स्टूडेंट्स मिलेंगे. सो फ्रेंड्स बनाने, लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स मिलने बहुत ईजी हो जाता है when you have a lot of people staying on the same campus. So I hope this video is of help to you. Please keep sharing and liking the video for the benefit of other students also. Take care.